है बच्चों हम पढ़ रहे चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, chapter 5 of political science, class 12th. So in this chapter we have seen the name of the countries of South Asia and how they were struggling with various political system at the time. About that also. Meanwhile we will discuss about the various political conditions of these countries and how they were surviving at the time. All these things we are going to think about. So let's see what happened in Pakistan. So Pakistan is a country which was separated from India on 14th of August 1947. So when the country was separated, so they need a different system to run the country, but the conditions were miserable. Mostly, as we have seen earlier, that the people of various countries wanted to establish democracy, but due to few circumstances they were not able to establish that system which is mostly popular in all over the world. So how the incidents were changed in Pakistan and what were the main leaders at that time and who were the leaders, what role were played by them, all these things we are going to see in today's topic. So we are starting from who was the first ruler. First military rule took place under General Yan Khan due to dissatisfaction against rule of General Ayub Khan. When the Pakistani constitution was made, the General Ayub Khan became the whole soul of the country and he was elected as a leader, but people were not satisfied with his rule. Then military rule was took over by the Yan Khan because people were not satisfied with General Ayub Khan. So pehla military rule, the first military rule was there under the leadership of General Yan Khan. Under leadership of Zulfikar Ali Bhutto 1971 to 77. उसके बाद क्या हुआ, 71 से 77 के बीच में जुल्फिकार अली भुट्टो ने गवर्नमेंट बनाई. So here we are seeing the main leaders and the system of Pakistan, how it was changed gradually. So earlier there was the government of Ayub Khan, people were not satisfied, then military rule took place, Yan Khan was the leader of the time, then Zulfikar Ali Bhutto ने गवर्नमेंट फ्रेम की 71 से 77 के बीच में. That was removed by General Zia-ul Haq. उसको जनरल ज़िया-उल हक ने रिमूव कर दिया. इट मीन्स अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर देखें, सो रूलर्स वांट टू डोमिनेट एंड they were preferring the military rules. So that was removed by General Zia-ul Haq, but faced pro-democracy movement from 1982 onwards. अब गवर्नमेंट को रिमूव तो किया, but the people were preferring democracy, so they faced the pro-democracy movement at the time. Then in 1988, elected government was established under Benazir Bhutto. मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जब जनरल ज़िया-उल हक ने उनको रिमूव किया, बट दे हैड टू फेस अ मूवमेंट ऑफ प्रो डेमोक्रेसी एंड इन 1988 इलेक्टेड गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश अंडर बेनज़ीर भुट्टो. बेनज़ीर भुट्टो के अंडर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो स्टैब्लिश हुई. दैन दैट फेस्ड कॉन्टेस्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी. अब ये जो कॉन्टेस्ट था, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बनी, तो बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को कॉन्टेस्ट फेस करना पड़ा किससे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग से. इट मीन्स लिटिल बिट डेमोक्रेसी वी कैन सी हेयर. When the Benazir Bhutto was elected in 1988, she had to face the competition from Pakistan People Party and Muslim League. इन दोनों से उसको कंपटीशन फेस करना पड़ा. किनसे, पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग से. तो अभी तक का एक बार हम दोबारा रिवाइज करें. क्या था, फर्स्ट मिलिट्री रूल टुक प्लेस अंडर द जनरल यान खान, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे अयूब खान से. देन under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto 71 to 77 government बनी, that was removed by
General Ziaul Haq, but they faced the pro-democracy movement from 1982 onwards. In 1988, elected government was established under Benazir Bhutto, which faced the contest from Pakistan People's Party and Muslim League. Then what happened? Army stepped in again. General Pervez Musharraf removed PM Nawaz Sharif. फिर जो बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो डेमोक्रेटिक एक टाइम स्टार्ट हुआ, तो जो नवाज शरीफ पीएम बने उनको भी आर्मी ने अपनी एंट्री से जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने रिमूव कर दिया और अपने आप को इलेक्टेड प्रेसिडेंट अनाउंस किया 2001 में. सो नवाज शरीफ वॉज रिमूव्ड बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ and Pervez Musharraf elected as the president in 2001. अब उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के बाद भी देखिए आप, जब जब मिलिट्री रूल हुआ है, then people raise the voice against that rule and against they raise their voice for democracy. Then again PM नवाज शरीफ रूल, उसके बाद PM नवाज शरीफ ने दोबारा रूल किया. देन 2017 to 18 के बीच में शाहिद खाका अब्बासी जो थे वो पीएम बने. देन 18 अगस्त 2018 को इमरान खान जो हमारे अभी पाकिस्तान के प्रेजेंट पीएम हैं वो सस्टेन कर रहे. तो इफ वी सी द इंसिडेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग वंस वी कैन सी दैट there was a dramatic change in the politics of Pakistan. At few part we can see the military was dominating, but it was opposed by the people because people wanted to have democracy. So time to time revolts were done, but still the things were not stable, and the reason was the country was not that much having stability, development, so the things are scattered. तो एक बार हम फिर देखते हैं. फर्स्ट मिलिट्री रूल जो हुआ दैट टुक प्लेस अंडर जनरल यहान खान. फिर क्या हुआ था, उनको हटा दिया गया ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन एंड जनरल अयूब खान ने रूल किया. देन जुल्फिकार अली भुट्टो 71 to 77 रहे, रिमूव्ड बाय जियाउल हक जिनको प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करना पड़ा 82 ऑनवर्ड्स. देन जो बेनज़ीर भुट्टो थी वो उनकी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट शी हैड टू फेस द कंपटीशन फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग. आर्मी जो थी इट स्टेप्ड इन बिकॉज जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने उनको रिमूव किया गया. जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने आप को उन्होंने एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट अनाउंस किया 2001 में. देन नवाज शरीफ अगेन रूल. उसके बाद शाहिद खाका अब्बासी 17 to 18 में रूल किया. और लास्ट लेटेस्ट 18 अगस्त 2018 को इमरान खान वॉज इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ पाकिस्तान. ये अभी तक का इनका पॉलिटिकल सिनेरियो जो पाकिस्तान का है उसका शॉर्ट ग्लिम्स है. नाउ वी आर सीइंग व्हाट वर द मेन एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट के मेन एरियाज क्या हैं. एक तो है कश्मीर. कश्मीर के मैटर पे जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, few part of Kashmir is still remaining in the Pakistan, and the issues are coming when they are attacking on the part of Kashmir which is existed in India. Then there is the issue of Siachen Glacier. Siachen Glacier may be they are going to have some terrorist activities that is also going to be opposed by India. Then both are having some security issues. कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ पे भी उनके आपस से कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो बाउंड्री को लेकर हो चाहे किसी और मैटर को लेकर हो. देन शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर वाटर. सिंधु नदी जो आपका इंडस पार्ट था दैट वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ इंडिया लिटिल बिट एंड नाउ इट इज़ इन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो उसका जो पानी है उसकी शेयरिंग को लेकर time to time they are having clashes between India and the Pakistan. time to time India और पाकिस्तान के बीच में क्लैश होते रहते हैं. कौन कौन से मुद्दे हो गए आपके? कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, सिक्योरिटी इश्यूज, शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर वैली, इंडस रिवर वाटर,
इंडस्ट्री वर्क के वाटर की शेयरिंग को लेकर भी इशू होता रहता है. So these are the main points how the political system changed in the Pakistan, and still we can just see that every time again and again people were preferring the PM who were elected by themselves only. अगर आप नवाज शरीफ देखें तो भी, इमरान खान देखें, आप बेनज़ीर भुट्टो देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो देखें, तो they were the elected people. So everywhere in the world people only wanted to have the elected government so that that particular government can be responsible and accountable. Military rule को बहुत कम relish किया जाता है, but still in Pakistan the thing we can see, the people were there, those who wanted to dominate on the other. Dominate करना, अपनी बात को impose करना, that is the main characteristic of the leadership. So here we can see how the things change dramatically, but still the people were liking the democracy, which is the most favorable ruling system in all over the world. So this was the glimpse of the political system of Pakistan. You need to read the whole topic from the NCERT also, and these particular notes will be helpful to revise the topic. आप इन टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, and do note down the things in your notebook so you will be able to revise the things properly. Whatever questions we are giving, do note down, and the links which we are sending of the CBSE, you can find the questions ki what sort of questions can come in the exam. If you will start doing the practice from starting, you will not have any issue. जो बच्चे starting से practice करते हैं कि what sort of questions can come, तो आपको उस practice से exam में benefit मिलेगा. So that's all for today. Do revise the things and do note down also. Don't forget to do the homework and don't forget to read from the NCERT. चैप्टर को NCERT बुक से ज़रूर रीड करें. That's all for today. Thank you so much.